Good afternoon, students. आज हम लोग कल जो टॉपिक्स कवर किए थे उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था। व्हाट इज़ स्ट्रेस, व्हाट इज़ स्ट्रेन, ओके, एंड हुक्स लॉ एंड कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेस इन स्ट्रेट, स्टेप्ड एंड टेपर्ड सेक्शंस। तो आज कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे पहले इसमें, उसके बाद फिर फर्दर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ 1 मिनट। ओके, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, न्यूमेरिकल। ओके, ए ब्रास बार हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1000 mm स्क्वायर। तो ये जो रॉड दिया हुआ है, बार दिया हुआ है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 1000 mm स्क्वायर। एरिया ए इज इक्वल टू 1000 mm square is subjected to axial forces shown in figure। 50 किलो न्यूटन का लेफ्ट साइड में इसमें एक फोर्स है, 10 किलो न्यूटन का राइट साइड में है कंप्रेसिव, और मिडिल में भी फोर्सेस हैं हमारे पास। फाइंड द टोटल elongation of the bar if modulus of elasticity, it means E, elasticity is equal to 100 giga Newton per meter square। ओके, ओके। अब अगर आप हमें इस तरह का कोई न्यूमेरिकल मिलता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस हैं किसी रॉड पर और डिफरेंट डिफरेंट लेंथ हैं, तो देखिए इन क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई
बॉडी है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 हो और उस पर अगर कोई फोर्स F1 अप्लाई हो रहा है और लेंथ अगर उसकी L1 है, तो इस केस में जो एलोंगेशन है इस फोर्स F1 की वजह से, बॉडी 1 अगर मैं इसको यहाँ पर कंसीडर करूँ, तो जो इलोंगेशन होगा इस बॉडी 1 में ड्यू टू दिस फोर्स F1, डेल्टा L1 इज इक्वल टू होगा फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, सिमिलरली यहाँ पर 3 सेक्शंस में हम इस बॉडी को डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन। ओके, तो अगर फर्स्ट सेक्शन की लेंथ L1 है और इसमें फोर्स F1 है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, तो जो सेक्शन 1 है उसमें जो टोटल इलोंगेशन होगा वो होगा F1 L1 अपॉन A1 इंटू ई। सिमिलरली अगर सेक्शन 2 की हम बात करें, लेंथ L2, क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 और फोर्स F2 है, टेंसाइल और कंप्रेसिव, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो in that case total elongation in section 2 will be equal to the F2 L2 upon A2 E. Okay, clear? Now थर्ड सेक्शन अगर हम यहाँ पर इसी तरह सिमिलरली थर्ड सेक्शन के लिए फोर्स अगर F1 है, F3 सॉरी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस सेक्शन इज A3, लेंथ अगर L3 है, in that case total elongation delta L3 will be equal to the force into length of section divided by क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू ई। नाउ अगर ये तीनों सेक्शन इस तरह से गिवन है, देखिए यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया सबका कॉमन है, हो सकता है आगे जो क्वेश्चंस हो उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट डिफरेंट हो, तो टोटल इलोंगेशन जो होगा बॉडी में इट विल बी इक्वल टू दी टोटल इलोंगेशन विल बी इक्वल टू द डेल्टा एल total elongation will be equal to the delta L1 plus delta L2 plus delta L3। ठीक है, so delta L will be equal to the F1 into L1 upon A1 into E plus F2 into L2 upon A2 into E plus F3 into L3 upon A3 into E। ओके, तो इस फार्मूले को यहाँ पर इस प्रॉब्लम में हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, सबसे पहले हमें यहाँ फाइंड आउट करना होगा इस डायग्राम में फोर्सेस को। ओके, तो फोर्सेस को किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं वो हम लोग सबसे पहले यहाँ देखेंगे। ओके, so here length of first section L1 is equal to the 0.6 meters, length of second section L2 is equal to the 1.0 meters, length of third section
L3 is equal to the 1.2 meters. Okay. Cross sectional area is given 1000 mm square, or we can say this, uh, 1 into 10 to the power minus 3 meter square. Okay. 1 is meter is equal to 1000 mm, तो 10 to the power 6 से हमें यहाँ डिवाइड करना होगा. 1 mm is equal to the 1 upon 10 to the power 3 meters. Then in that case 1000 mm square will be 1 into 10 to the power minus 3 meter square. Okay. Now forces, टोटल फोर्सेस का जो इफेक्ट है बॉडी पर वो ज़ीरो है, इक्विलिब्रियम में है. कंसीडर सेक्शन 1, section 2 and section 3. Okay. विजिबल होगा आपको ये. ओके. नाउ फोर्स ऑन फर्स्ट सेक्शन के लेफ्ट साइड में जो फोर्स है वो एक टेंसाइल फोर्स है 50 किलो न्यूटन का. क्लियर. अगर 50 किलो न्यूटन का टोटल फोर्स लेफ्ट साइड में है तो इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए राइट साइड में भी एक टेंसाइल फोर्स होना चाहिए 50 किलो न्यूटन का. ओके. नाउ हम लोग एक एक लेयर की बात करेंगे. सेक्शन 1 और सेक्शन 2 लेयर के बीच में टोटल जो फोर्स लग रहा है वो राइट साइड की तरफ 80 किलो न्यूटन का फोर्स है. यहाँ पर देखिए सेक्शन 1 का लेयर पर जो फोर्स होगा वो 50 किलो न्यूटन का होना चाहिए. सेक्शन 2 पर फोर्स की डायरेक्शन क्या हो कि 50 किलो न्यूटन के साथ ऐड होने के बाद अलजेब्रिकली जो टोटल सम है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपका 80 किलो न्यूटन का हो जाए. देखिए फिर से समझिए. 50 किलो न्यूटन का सेक्शन 1 और 2 के बीच में 50 किलो न्यूटन का फोर्स है पॉजिटिव एक्स में. टोटल रिजल्टेंट जो है F1 इसको मैं मान लेता हूँ, जो टोटल रिजल्टेंट है R वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है 80 किलो न्यूटन और उसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स में. तो प्लस ए, यहाँ पर क्या फोर्स, ए की जगह मैं इसको F2 कर लेता हूँ. लाइए लेट्स से F2. तो मुझे यहाँ F2 फाइंड आउट करना है. 50 प्लस F2 इज इक्वल टू दी 80 किलो न्यूटन. सो F2 इज इक्वल टू दी 80 माइनस 50, इट मीन्स 30 किलो न्यूटन. और डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? डायरेक्शन विल बी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो सेक्शन 2 के लेफ्ट साइड पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए और जो मैग्नीट्यूड होगा उसका 30 किलो न्यूटन होगा. इन दोनों फोर्सेस को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स 80 किलो न्यूटन का आएगा जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में है. रिजल्टेंट टोटल. क्लियर. ओके. अब अगर सेक्शन 2 को इक्विलिब्रियम में कंडीशन में रहना है तो इसके राइट साइड वाली वॉल पर जो फोर्स होना चाहिए वो इक्वल फोर्स होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में. तो ये टोटल कंप्रेसिव फोर्स होगा 30 किलो न्यूटन का. तो सेक्शन 1 पर जो फोर्स है वो आपका टेंसाइल फोर्स है F1 50 किलो न्यूटन, और जो सेक्शन 2 पर फोर्स है वो आपका यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स है. अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 और 3 के बीच की लेयर की. इसमें आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है
वो माइनस एक्स डायरेक्शन में 20 किलो न्यूटन का है। ओके। और सेक्शन टू की लेयर, सेक्शन थ्री की लेयर, सेक्शन टू की लेयर पर माइनस एक्स डायरेक्शन में ही एक 30 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, F1 F2। ठीक है। तो रिजल्टेंट है 20 किलो न्यूटन का। तो F3 फोर्स की क्या मैग्नीट्यूड लें हम, जिससे टोटल रिजल्टेंट फोर्स आपका आ जाए 20 किलो न्यूटन। तो देखिए, F2 प्लस F3 is equal to the 20 किलो न्यूटन। Here F3 is equal to the 20 minus 30। जो मैग्नीट्यूड होगा वो आएगा -10 किलो न्यूटन। माइनस साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके। 30 किलो न्यूटन में से अगर हम 10 किलो न्यूटन सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी हमारे पास 20 किलो न्यूटन बचेगा। तो 30 किलो न्यूटन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो माइनस एक्स है। इट मीन्स सेक्शन थ्री के लेफ्ट साइड में आपका जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 10 किलो न्यूटन का फोर्स होना चाहिए। अब आप ऑटोमेटिकली देखेंगे, जो सेक्शन लास्ट सेक्शन है, लास्ट सेक्शन के थर्ड सेक्शन के राइट साइड में आपका जो फोर्स का डायरेक्शन है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड भी 10 किलो न्यूटन का है। यहाँ अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आना चाहिए अलजेब्रिक सम के बाद वो 20 किलो न्यूटन आएगा, और वो भी 30 किलो न्यूटन वाले फोर्स की डायरेक्शन में, इट मीन्स माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो आपको फोर्स F1 यहाँ पर मिला। फोर्स F1 इज इक्वल टू दी प्लस 50 किलो न्यूटन। फोर्स F3 इज इक्वल, F2 इज इक्वल टू दी माइनस 30 किलो न्यूटन, बिकॉज कंप्रेसिव फोर्स है। और सेक्शन थ्री पर जो फोर्स है F3 इज इक्वल टू, वो भी कंप्रेसिव है, -10 किलो न्यूटन। अब यहाँ पर जो सेक्शन वन होगा उसमें जो लेंथ होगी वो इंक्रीज होगी, लेट से डेल्टा L1। सेक्शन टू में जो लेंथ होगी वो डिक्रीज होगी, डेल्टा L2 मान लेते हैं उसको। और सेक्शन थ्री में भी इसकी लेंथ डिक्रीज होगी, लेट से माइनस डेल्टा L3। क्लियर है? ओके। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। Now, here force on first section F1 is equal to the plus 50 kilonewtons. Force on second section F2 is equal to the minus 30 kilonewtons. And force on third section F3 is equal to the, वो भी कंप्रेसिव फोर्स है इसलिए -10 kilonewtons. Now, if elongation in first section is delta L1 and elongation या change in length of section 2 is delta L2 and change in length of section 3 is delta L3. In that case, total elongation delta L is equal to the delta L1 plus delta L2 plus delta L3. We know that delta L1 is equal to F into L1 upon cross sectional area is same, A into E, plus F2 into L2 upon A into E, plus F3 into L3 upon A into E. Now 1 upon AE is equal to the F1 into L1 plus F2 into L2
प्लस F3 इंटू L3. Delta L. Delta L will be equal to the 1 upon 10 to the power minus 3 क्रॉस सेक्शनल एरिया है मीटर स्क्वायर में, और E की वैल्यू है 100 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसको किलो न्यूटन में हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो हम इसे चेंज कर ले पहले. वी नो दैट E इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू गीगा इज 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और से 100 इंटू 10 टू द पावर 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, तो इस वैल्यू को आप रखेंगे 100 इंटू 10 टू द पावर 3, 100 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू force F1 is 50, L1 is given 0.6 meters, plus F2 is minus 30, L2 is 1, okay, plus F3 is minus 10, L3 is 1.2, okay. Now from here 1 upon 100 is equal to the 30 minus 30 minus 12, okay. So delta L is equal to the minus 12 upon 100 meters, और से minus 0.12 meters. तो टोटल इलोंगेशन होगा, लेंथ डिक्रीज होगी बॉडी की, इस सेक्शन बॉडी बार की, इस तो टोटल जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल विल बी इक्वल टू दी 0.12 meters decrease. Length will be decreases. Okay. एक सेकेंड, ये 10 टू द पावर 6 है बेसिकली, तो यहाँ 10 टू द पावर 3 आएगा, और यहाँ पर भी 10 टू द पावर 3 होगा, डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3, तो ये 0.12 mm है बेसिकली. ओके, 0.12 mm. ओके, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अप्लाई करते हैं. नाउ a copper bar as shown in figure is subjected to a tensile load of 30 kilonewton. Okay, determine elongation of bar if E is equal to 100 gigapascal. Also find maximum stress induced. तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना इंड्यूस हो रहा है वो फाइंड आउट करना है हमें, और जो
गिवन है चीज़ें, पहले उसे हम लिख लेते हैं। डायमीटर भी यहाँ डिफरेंट डिफरेंट है सेक्शंस का। ओके, तो यहाँ जो सेक्शंस है, सेक्शन 1 इसको कंसिडर कर लेते हैं, इसे सेक्शन 2, इसे सेक्शन 3। यहाँ एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है, और आपका जो लेंथ है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो गिवन लेंथ of section 1 L1 is equal to 150 mm. Now length of section 2 L2 is equal to the 200 mm. Length of section 3 L3 is equal to the 150 mm. Okay, and dia of section 1 D1 is equal to the 25 mm. यहाँ से हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन 1 का। ओके, dia of section 2 is D2 is equal to the 20 mm, and dia of section 3 is 35 mm. Okay, now first of all, force is given, force is constant, force F is equal to the 30 kilonewton, and modulus of elasticity is 100 gigapascal. Okay, now first of all, determine the cross sectional area of section 1, 2 and 3. First of all, we have to determine the cross sectional area of section 1, 2 and 3. Now area of section 1, A1 is equal to the pi by 4 D1 square, and D1 is given 25, so pi by 4 upon 25 square. Okay, now we have to calculate this. Pi by 4, 25 square into pi divided by 4. Divided by 4, 490. So cross section area of section 1 is 490
mm square. Okay. Now similarly, cross sectional area of section 2, A2 will be is equal to pi by 4 d2 square. Pi by 4, diameter of section 2 is 20 mm. 20 square will be equal to the 314 mm square. Okay. And the cross sectional area of section 3 will be pi by 4 d3 square. Pi by 4 d3 is 35. So the cross sectional area is 962 mm square. Okay. Now according to the question, find out maximum stress induced. Determine total elongation of the bar and also find out maximum stress. जो इस maximum stress induced हुई है उसे भी determine करना है. So here total elongation will be is equal to the force total elongation. Delta L is equal to the elongation in section 1. If elongation in section 1 is delta L1 and elongation in section 2 is delta L2 and elongation in section 3 is delta L3, in that case total elongation will be equal to the delta L is equal to delta L1 plus delta L2 plus delta L3. Now delta L will be is equal to the force into length upon A1 into E plus force into length upon A2 into E plus force into L3 upon A3 into E. सो यहाँ फोर्स जो है सेक्शन पे वो इक्वल है. सो डेल्टा एल विल बी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2 plus L3 upon A3. Okay. We know that 1 megapascal is equal to 1 Newton per mm square. Okay. 1 megapascal is equal to the 1 Newton per meter square. So from here, putting the values of okay. Now putting the values of all the force is 30 kilonewton, I think. Force is 30 kilonewton. Modulus of elasticity is 100 gigapascal. We can change this 100 into 10 to the power 9
10 to the power 3 megapascal, and 1 megapascal is equal to 1 Newton per mm square. So here 100, we can write this 100 kilonewton per mm square like this. ओके 100 किलोन्यूटन पर एम स्क्वायर. फिर से समझ लीजिए 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू दी 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर. ओके एंड 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू दी 10 to the power 9 pascals. 1 megapascal is equal to the 10 to the power 6 pascals, and 1 kilopascal is equal to the 10 to the power 3 pascals. Okay, now F is 30 kilonewton and E is 100 kilonewton per mm square. L1 is given is L1 is 150 and area of 150 by 490. 150 mm is length of first section. Cross sectional area is 490 plus L2, length of second section is 200 mm and cross sectional area is 314 plus length of third section is 150 mm and cross sectional area is 962. Now calculate this. 3 by 10 is equal to the this is equal to the 1.09. So the total elongation in the bar is delta L is equal to the 0.33 mm. This is the total elongation. Length will increase by 0.33 mm. Now we have to calculate the maximum stress induced in the bar. What is the formula of stress? We know that stress is equal to the force upon area. So here stress is inversely proportional to the cross sectional area because here force is constant. Okay, so the stress will be maximum whose cross sectional area is minimum. So the cross sectional area of section 2 is minimum. In that case 314 mm square. In that case maximum stress will be induced in the section 2, which is equal to the maximum stress sigma is equal to the force upon area of section 2. Okay, so here force is 30 kilonewton and cross sectional area is 314.
In that case, maximum stress induced in the rod is 0.095 kilo Newton per mm square. Okay, or say sigma is equal to the 95.5 Newton per mm square. Okay, now आई थिंक ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें आपके सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट पोर्शन जो इसमें है. थर्मल stresses in the sections due to the temperature. ओके, तो अगर किसी भी ऐसा कोई रॉड लिया जाए या मटेरियल हो जिसको दो साइड जिसकी लेंथ दोनों एंड से उसको फिक्स कर दिया जाए, यानी कि उसकी लेंथ इंक्रीज ना होने दें हम, और अगर उसमें उसे हीट किया जाए, उस मटेरियल को अगर हीट किया जाए, तो इस केस में मटेरियल में थर्मल स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड हो जाते हैं. रीज़न क्या है? रीज़न देखिए, अगर कोई रॉड है हमारे पास और उसको दोनों साइड से हम फिक्स कर दें, और इसे इसे हम हीट करें, इसमें टेम्परेचर को हम वेरी कराएं. इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए इसका T1 था, और T1 से हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करके T2 टेम्परेचर तक, हायर टेम्परेचर पर इसे ले जाएं. तो इस केस में ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे ही हम इसे हीट करेंगे तो ये जिसकी इस रॉड की जो भी लेंथ है इनिशियली, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इसकी लेंथ और ज़्यादा इंक्रीज होने की कोशिश होगी, ट्राई होगा. ठीक है ना, इंक्रीज होना ही रहेगा. लेकिन दोनों एंड्स पे हमने इसे फिक्स कर रखा है तो लेंथ इंक्रीज नहीं हो पाएगी. तो इसकी वजह से इस बॉडी में थर्मल स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड हो जाएंगे. तो बेसिकली थर्मल स्ट्रेसेस क्या है? थर्मल stresses. So thermal stresses, if the temperature of a body is increased or decreased, then its dimension will in decreases or increases. If the temperature is increases, then the dimension will be increases. If the temperature is decreases, in that case the dimension will be decreases correspondingly. Okay, if these changes are checked, the stresses thus developed in the body are called temperature stresses, and corresponding strains are called temperature strains. Let length of a bar uniform cross section, जैसे अभी अपने एग्जांपल में लिया है, is L, length of bar is L, and initial temperature of the bar is initial temperature of bar is T1, and final temperature of the bar is final temperature
of bar is T2 and coefficient of linear expansion coefficient of linear expansion is alpha. In that case, the extension in the bar to rise in temperature will be extension. It means जो डेल्टा एल जो चेंज इन लेंथ होगा डायमेंशंस होंगे तो डेल्टा एल विल बी इज इक्वल टू द एक्सटेंशन और से एक्सटेंशन in the bar will be is equal to the alpha into T2 minus T1 into L. ओके तो अब इस कंडीशन से हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू दी अल्फा डेल्टा टी इंटू एल. नाउ the thermal strain will be is equal to the thermal strain will be is equal to the change in length upon initial length. Here alpha delta T into L is the change in length or initial length is L. In that case, thermal strain will be is equal to the alpha into delta T. So thermal stress will be equal to the strain into modulus of elasticity. So sigma is equal to the alpha into E into delta T. Okay. So this is the thermal stresses and thermal strain in a bar due to change in its temperature. Okay. Now the next topic is shear and lateral strain and longitudinal strain and Poisson's ratio. So now what is lateral strain and what is longitudinal strain? Longitudinal and lateral strain. Let us consider a bar of rectangular cross section. If the length of the bar is L, height of the bar is H, and width of the bar is B. Okay.
ओके। और इस कंडीशन में हम इस पे इसके प्लेन्स पर क्रॉस सेक्शन पर एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं ऑफ मैग्नीट्यूड एफ। सो when a tensile force applied on this rectangular bar, in that case the length of this bar will increase. Okay, the length of the bar will increase. इसकी बार की लेंथ इंक्रीज होगी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत. लेट सपोज डेल्टा एल लेंथ इंक्रीज होगी. ओके. और साइमल्टेनियसली हाइट और विड्थ डिक्रीज होंगे. लेंथ अगर इंक्रीज होगी ड्यू टू दिस टेंसाइल फोर्स, then in that case the height and width will decrease. Okay, let's suppose width will decrease by delta b and height is decreased by delta h. ये ये फिनोमेना हम सब जानते हैं ऐसा ही होगा. अगर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल डायमेंशन जो है वो इंक्रीज होगी. टेंसाइल फोर्स होगा. कंप्रेसिव होता तो वो डिक्रीज होती. तो लेंथ की फोर्स की डायरेक्शन में लेंथ जो आपकी है वो इंक्रीज होगी. और जो लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर डायमेंशंस हैं जैसे हाइट और विड्थ, ये उसके अकॉर्डिंग डिक्रीज करेंगे. ओके. सो change in dimension parallel to the line of action of the force is known as longitudinal changes. Okay, change in dimension parallel to the line of action of the force is known as longitudinal changes. Okay, and corresponding strain is known as longitudinal strain. So from here longitudinal strain will be equal to the change in length upon initial length, because here length of this bar is parallel to the line of action of the force. So the longitudinal strain will be is equal to the delta L by L, and the lateral strain will be change in width upon initial width or change in height upon initial height. इक्वल नहीं होंगे, ये एक डायमेंशंस के अकॉर्डिंग इसके चेंजेस होंगे. ओके, lateral strain and longitudinal strain. Okay, now experimentally ये पाया गया the ratio of for a material, okay, the ratio of lateral strain upon longitudinal strain is constant. Okay, what is the ratio of lateral strain upon longitudinal strain is constant. If longitudinal strain is positive then lateral strain will be negative. Why? अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो बाकी जो परपेंडिकुलर डायमेंशन है वो डिक्रीज होंगे. और अगर लेंथ डिक्रीज होगी यानी कि पैरेलल डायमेंशंस डिक्रीज होंगे तो परपेंडिकुलर डायमेंशंस विल बी इंक्रीज. तो अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस है
डायमेंशंस इंक्रीज हो रहे हैं तो लैटरल स्ट्रेन आपकी माइनस में आएगा क्योंकि डायमेंशंस डिक्रीज होंगे। तो इसीलिए यहाँ एक माइनस साइन हम अप्लाई करते हैं एक वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू के लिए, क्योंकि अगर लेटरल स्ट्रेन प्लस है तो लॉन्गिट्यूडनल माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस। अगर लेटरल माइनस है और लॉन्गिट्यूडनल प्लस है, इन दैट केस माइनस माइनस विल बी प्लस। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू द लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसे हम कहते हैं पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो, mu is known as Poisson's ratio. So the Poisson's ratio is the ratio of lateral strain and longitudinal strain is known as Poisson's ratio. Okay, so आज इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, बाकी क्लास नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।